1. Entrenched, adjective. मोर्चाबंद, कलाबंदी. Of an attitude, habit, or belief, firmly established and difficult or unlikely to change, ingrained. 2. Fester, verb. पस पड़ जाना, जलना. Of a wound or sore, become septic, suppurate. 3. Patronage, noun. ताइद, हिमायत. The support given by a patron. 4. Leverage, noun. कुवत, असर, बीरमी निजाम. The exertion of force by means of a lever. 5. Dominance, noun. बालादस्ती, गलबा, फौकियत. Power and influence over others. 6. Averse, adjective. मुखालिफ, नारजामंद, कराहत आमेज. Having a strong dislike of or opposition to something. 7. Perpetual, adjective. हमेशा रहने वाला, दायमी, मुस्तकिल. Never ending or changing. 8. Persist, verb. बाकी रहना, कायम रहना, साबित कदम रहना. Continue in an opinion or course of action in spite of difficulty or opposition. 9. Afflict, verb. दुखी होना, मुसीबत. Of a problem or illness, cause pain or trouble to, affect adversely. 10. Dominate, verb. गालिब होना, हुकूमत करना, तसल्लुत हासिल करना. Have power and influence over. 11. Insulate, verb. ढांपना, महफूज बनाना. Protect something by interposing material that prevents the loss of heat or the intrusion of sound. 12. Buttress, verb. सहारा, पुश्ता, किसी दीवार की पुश्ता बंदी करना. Increase the strength of or justification for, reinforce. 13. Accumulation, noun. बढ़ावा, इजाफा, ढेर. The acquisition or gradual gathering of something. 14. Anomaly, noun. बेजाबित, बेतरतीबी, बेकायदगी. Something that deviates from what is standard, normal, or expected. Pakistan's bane has long been a narrow, oligarchic power elite that has dominated its politics and controlled its economy at the cost of people's welfare and the country's progress and development. Its entrenched position over decades meant that governance challenges multiplied with force and intensity, leaving the country with daunting problems of solvency, security, and mounting energy and water shortages. These were left to fester rather than be addressed. Chronic instability and an oligarchic political order impeded the evolution of modern governance. Patronage-based politics practiced by elected and military governments alike relied on working networks of influential political families, kinship groups, and biradarists to maintain them in power. But this mode of governance failed to meet the needs of an increasingly complex society. Yet the mass of unfulfilled public expectations never persuaded the elite to meaningfully respond to the needs and demands of the people. This power elite resisted meaningful reform, whether land reform, tax reform, or reforms in governance. It also acquired rentier characteristics, using access to public office as a means of leveraging state resources to transfer wealth and acquire sources of unearned income. This has been a common feature of both civilian and military elites. Both used patron-client relationships to reinforce their dominance and protect their economic interests and privileged status. With successive civilian and military governments living beyond their means, unwilling to mobilize domestic resources and averse to economic reform, that fact alone contributed to miring Pakistan in perpetual financial crisis, with virtually every government in the past 5 decades leaving the economy in much worse shape for its successors to manage. Borrowing both at home and abroad became its preferred way of managing public finances, which has landed the country today with an unprecedented and unsustainable level of debt. Can the stranglehold of a narrow elite over the economic and political system be broken? The politics and economics of elite capture has long been discussed in the country. Published some years ago,
Ishrat Hussein's impressive book, The Economy of an Elitist State, highlighted how 1% of the population constituting an elite group maintained a stranglehold on the affairs of the state. Its power and dominance persisted through different forms and changes of government. As did inequality, which continues to characterize Pakistani society. Hussein's main argument was that the respective roles of the state and market had been reversed as a narrow elite rigged the markets and hijacked the state to advantage itself. It concluded that this concentration of wealth and political power at the expense of the majority of the population had created a situation that was neither socially acceptable nor economically sustainable. Now an important new book has joined this debate and generated many webinars and podcasts across the country that take this discussion forward. Big Capital in an Unequal World: The Micropolitics of Wealth in Pakistan by Rosita Armitage offers a fascinating insight into Pakistan's uppermost elite and its networks and methods that help to maintain its position and reinforce inequality in the country. The author casts her book as an ethnography of the micropolitics of elite lives, which she had the opportunity to observe during the time she spent in the country, working and then researching here. It is as much a study of the daily experience of modern capitalism among Pakistan's business elite as an insight into the social conduct, relationship building, marriages and political connections of its members. She describes Pakistan as a compelling case of elite power, which, like many rapidly developing states, is run by an oligarchy of economic and political interests and afflicted by high levels of instability. But this instability is encouraged by powerful families that benefit from it through what she calls the culture of exemptions. More on this later. Armitage sets out to investigate Pakistan's elite and configuration of power involving the institutions and structures that determine the allocation of wealth and political influence. But she finds that beneath the formal structure lie networks of power and influence linked by family and social connections through which economic and political competition, deals and alliances are, as it were, pre-negotiated. The book argues that major wealth in the country is concentrated among a limited number of families that dominate the principal political parties and leading firms and have family links with the senior echelons of the military. She observes that marriages among the slowly expanding elite help to create bonds between families and promote political dynasty making, which insulate elite members from threats to their power and influence. In many respects, Chapter 6 is the core and the most interesting portion of the book. In this, Armitage details the culture of exemptions that enable members of the elite to maintain and buttress their positions and thwart competition. The use of law as a mechanism, plus extra-legal and sometimes illegal activities constitute the means of wealth accumulation and preservation as well as tax avoidance. She writes that, like the global elite of which they are a part, the Pakistani elite direct the legal and regulatory structures that determine the flows of wealth and opportunity within the country, while simultaneously operating outside of and above these structures. This she calls the culture of exemptions. The broader conclusions she draws from her study are that elite capitalism in Pakistan is far from being an anomaly, but the specific nature of its elite and highly localized form of business and finance contradicts the widely held assumption that the world is moving towards an era of globalized and standardized capitalism. An important finding is that Pakistan's elite-dominated economy shows little sign of transitioning to a globalized high-finance economy. What rings so true is how its hyper-provincialized character gives its members an inward-looking economic and political focus. Most of the economic elite are not globally focused players and have also acquired an anti-West orientation. This is a must-read book that should encourage more debate about the role of the elite and especially how its stranglehold over the economic and political system can be broken by a growing middle class that seeks, but has yet to secure a bigger voice in national affairs. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, February 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary.
पाकिस्तान के लिए एक तवील अरसे से एक तंग नज़र अशराफिया रही है, जिसने अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्की तरक्की और खुशहाली की कीमत पर उसकी सियासत पर गलबा हासिल किया है और उसकी मईशत को कंट्रोल किया है। कई दहाइयों से इसकी मजबूत पोजीशन का मतलब यह था कि गवर्नेंस के चैलेंजेस ताकत और शिद्दत के साथ बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से मुल्क को बचत, सलामती और तवानाई और पानी की बढ़ती हुई किल्लत जैसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ा। इन पर तवज्जो देने के बजाय उन्हें परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया। दायमी अदम इस्तेहकाम और अशराफिया के सियासी निज़ाम ने जदीद हुक्मरानी के इर्तिका अशारिया में रुकावट डाली। मुंतखब और फौजी हुकूमतों की सरपरस्ती पर मबनी सियासत का इन्हिसार बासर सियासी खानदानों, रिश्तेदारों के गिरोहों और बरादरों के वर्किंग नेटवर्क्स पर था ताकि उन्हें इक़्तिदार में बरकरार रखा जा सके। लेकिन हुक्मरानी का यह तरीका तेजी से पेचीदा मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहा। फिर भी अवाम की अधूरी तवक्कुआत ने कभी भी अशराफिया को अवाम की ज़रूरियात और मुतालिबात का बामानी जवाब देने पर आमादा नहीं किया। इस ताकतवर अशराफिया ने बामानी इस्लाहात की मुखालफत की, चाहे वो अराजी इस्लाहात हों, टैक्स इस्लाहात हों या गवर्नेंस में इस्लाहात। इसमें किरायादार खुसूसियात भी हासिल की, दौलत की मुंतकिली और गैर कमाई आमदनी के ज़राए हासिल करने के लिए रियासती वसाइल से फ़ायदा उठाने के ज़रिया के तौर पर अवामी ओहदे तक रसाई का इस्तेमाल। यह सिविलियन और फ़ौजी अशराफिया दोनों की एक आम खुसूसियत रही है। दोनों ने अपने गलबे को मजबूत बनाने और अपने माशी मफादात और मुराअत याफ्ता हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरपरस्त और क्लाइंट ताल्लुकात का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक आने वाली सिविलियन और फौजी हुकूमतें अपने वसाइल से हटकर काम कर रही हैं, मुल्की वसाइल को मुतहर्रिक करने के लिए तैयार नहीं हैं और माशी इस्लाहात के खिलाफ हैं। इस हकीकत ने ही पाकिस्तान को दायमी माली बहरान में धकेल दिया है। गुज़िश्ता 5 दहाइयों में तकरीबन हर हुकूमत ने मईशत को इसके जानशीनों के लिए बहुत ख़राब हालत में छोड़ दिया है। अंदरून और बैरून मुल्क कर्ज लेना अवामी मालियात के इंतज़ाम का तरजीही तरीका बन गया, जिसमें आज मुल्क को कर्जों की एक बेमिसाल और गैर मुस्तहकम सतह पर ला खड़ा किया है। क्या माशी और सियासी निज़ाम पर तन अशराफिया का गला गिनता जा सकता है? अशराफिया के कब्ज़े की सियासत और मुआशियात तवील अरसे से मुल्क में ज़ेर बहस रही है। चंद साल कबल शाये होने वाली इशरत हुसैन की मुतासिर कुन किताब दी इकानमी ऑफ एन इलियट स्टेट में इस बात पर रोशनी डाली गई थी कि किस तरह अशराफिया ग्रुप पर मुश्तमिल 1% आबादी ने रियासत के मामलात पर गहरी गिरफ्त बरकरार रखी। इसकी ताकत और गलबा हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लों और तब्दीलियों के जरिए बरकरार रहा, जैसा कि अदम मसावात ने किया, जो पाकिस्तानी मुआशरे की खुसूसियत है। हुसैन की बुनियादी दलील ये थी कि रियासत और मार्केट के मुतालिका किरदार ओहे को उलट दिया गया था, क्योंकि एक तन अशराफिया ने बाजारों में धांधली की और खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रियासत को हाईजैक किया। ये नतीजा अखज़ किया गया कि आबादी की अक्सरियत की कीमत पर दौलत और सियासी ताकत के इस इर्तिकाज़ ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जो ना तो समाजी तौर पर काबिल कबूल है और न ही माशी तौर पर पायदार है। अब एक अहम नई किताब इस बहस में शामिल हो गई है और मुल्क भर में बहुत से वेबिनार और पॉडकास्ट तैयार किए हैं जो इस बहस को आगे ले जाते हैं। एक गैर मसावी दुनिया में बड़ा सरमाया रूज़ी तायरंज की जानिब से पाकिस्तान में दौलत की माइक्रो पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सबसे ऊंची अशराफिया और उसके नेटवर्क्स और तरीकों के बारे में एक दिलचस्प बसीरत फराहम करती है, जो उसकी पोजीशन को बरकरार रखने और मुल्क में अदम मसावात को तक़वियत देने में मदद करते हैं। मुसन्निफ़ा ने अपनी किताब को अशराफिया की ज़िंदगी ओहे की माइक्रो सियासत की एक नस्लपरस्ती के तौर पर पेश किया है, जिसका मुशाहिदा करने का मौका उन्हें मुल्क में गुजारे गए वक्त, काम करने और फिर यहाँ तहक़ीक़ करने का मौका मिला। ये पाकिस्तान की कारोबारी अशराफिया में जदीद सरमायादाराना निज़ाम के रोज़मर्रा के तजुर्बे का इतना ही मुताला है जितना इसके अरकान के समाजी तर्ज़ अमल, ताल्लुकात की तामीर, शादियों और सियासी रवाबित के बारे में बसीरत है। वो पाकिस्तान को अशराफिया की ताकत का एक मजबूत केस करार देती हैं, जो बहुत सी तेज़ी से तरक्की पजीर रियासतों की तरह माशी और सियासी मफादात की अशराफिया के ज़ेर इंतज़ाम है और आला सतह के अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लेकिन इस अदम इस्तेहकाम की हौसला अफजाई ताकतवर ख़ानदानों की तरफ से की जाती है, जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, जिसे वो इस्तिस्ना की सकाफत कहती है। इस बारे में मज़ीद बाद में।
आर्मी स्टेज पाकिस्तान की अशराफिया और इक़्तिदार की तश्कील की तहक़ीक़ात करता है, जिसमें इन इदारों और ढांचों को शामिल किया जाता है जो दौलत की तकसीम और सियासी असर और रसूख का तयन करते हैं। लेकिन वो महसूस करती हैं कि रस्मी ढांचे के नीचे इक़्तिदार और असर और रसूख का नेटवर्क मौजूद है जो ख़ानदानी और समाजी राब्तों से मुंसलिक है, जिसके ज़रिए माशी और सियासी मुसाबकत, मुआहदे और इत्तेहाद जैसा कि पहले से तयशुदा थे। किताब में दलील दी गई है कि मुल्क में ज़्यादातर दौलत महदूद तादाद में ख़ानदानों के दरमियान मरकूज़ है जो अहम सियासी जमातों और सरकर्दा कंपनियों पर गलबा रखते हैं और फ़ौज के आला ओहदेदारों के साथ ख़ानदानी रवाबित रखते हैं। वो कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फैलती हुई अशराफिया के दरमियान शादियां ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुकात कायम करने और सियासी ख़ानदान साजी को फ़रोग़ देने में मदद करती हैं, जो अशराफिया के अरकान को उनकी ताकत और असर और रसूख के ख़तरात से बचाती है। बहुत से मामलात में बाब 6 किताब का बुनियादी और सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसमें इल्म इस्तिस्नात के कल्चर की वजाहत करता है जो अशराफिया के मेंबरों को अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखने और मजबूत करने और मुसाबकत को नाकाम बनाने के काबिल बनाता है। कानून को एक मेकानिज़्म के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ गैर कानूनी और बाज़ औक़ात गैर कानूनी सरगर्मियाँ दौलत जमा करने और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ टैक्स से बचने का ज़रिया बनती है। वो लिखती हैं कि आलमी अशराफिया की तरह, जिसका वो हिस्सा हैं, पाकिस्तानी अशराफिया कानूनी और रेगुलेटरी ढांचों की रहनुमाई करती है जो मुल्क के अंदर दौलत और मौक़े के बहाव का तयन करते हैं, जबकि बैक वक्त उन ढांचों के बाहर और उसके ऊपर काम करते हैं। इसे वो इस्तिस्ना का कल्चर कहती हैं। वो अपने मुताले से जो वसी तर नतीजा अखज़ करती हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अशराफिया सरमायादाराना निज़ाम एक बेतरतीबी से कोसों दूर है, लेकिन इसकी अशराफिया की मखसूस नौयत और कारोबार और मालियात की इंतहाई मकामी शक्ल इस मफरूज़े के मुनाफी है कि दुनिया ग्लोबलाइज्ड और मियारी सरमायादारी के दौर की तरफ बढ़ रही है। एक अहम दरियाफ्त यह है कि पाकिस्तान की अशराफिया के गलबे वाली मईशत ग्लोबलाइज्ड हाई फिनांस मईशत की तरफ मुंतकिल होने के बहुत कम इशारे दिखाती है। सच तो यह है कि इसका हाइपर प्रोविंशलाइज्ड किरदार किस तरह अपने अरकान को अंदरूनी तौर पर नजर आने वाली माशी और सियासी तवज्जो देता है। ज़्यादातर माशी अशराफिया आलमी सतह पर तवज्जो मरकूज करने वाले खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने मगरिब मुखालिफ रुझान भी हासिल कर लिया है। ये एक लाजमी पढ़ी जाने वाली किताब है जिसमें अशराफिया के किरदार के बारे में मजीद बहस की हौसला अफजाई की जानी चाहिए और ख़ास तौर पर किस तरह माशी और सियासी निज़ाम पर उसकी गिरफ्त को एक बढ़ता हुआ मुतवस्सित तबका तोड़ सकता है जो चाहता है लेकिन अभी तक कौमी मामलात में एक बड़ी आवाज़ हासिल नहीं कर सका है। मज़मून निगार अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ सफ़ीर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 20 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.